औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पाकिस्तान की मईशत में देयर इज़ सम ट्रैक्शन व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट, अगेन देयर इज़ सम ट्रैक्शन एंड व्हेन यू लुक एट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा नज़र आता है कि गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट चीज़ों को लॉन्ग टर्म बेसिस में ठीक करने में इंटरेस्टेड है। रिफॉर्म्स की जानिब गवर्नमेंट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस सारे मामले में जो एक ट्रायंगल है, एक तिकोन है, उसके अंदर एक सैलरी क्लास जो है वो फंसी हुई नज़र आ रही है या फंसती हुई नज़र आ रही है। जो नक्शा इस वक्त खिंचा है मईशत का वो कुछ ऐसा है कि IMF ने जो है वो सोलराइजेशन की पॉलिसी के ऊपर एतराज़ उठाया है, बिकॉज़ IMF समझता है कि उसके जो कर्ज़े की रिकवरी है पावर सेक्टर और जो PDL है वो एक सिंगल सोर्स है जिसकी वजह से IMF को पैसे की रिकवरी होती है। सो IMF हैज़ रेज कंसर्न ओवर द सोलराइजेशन पॉलिसी। ADR के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है और ये जो सारा बर्डन है फिर ट्रिकल डाउन हो के टैक्सेस का अगेन एक सैलरी क्लास के ऊपर जा रहा है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इनटू दिस प्रोग्राम इज़ दिस कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस इकनॉमिक आउटलुक में एक सैलरी क्लास का जो बंदा है, इंडिविजुअल है या आम पाकिस्तानी है, फंसा हुआ है, उसके लिए क्या कुछ कौन कर रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड उसके लिए क्या कुछ है इस पाकिस्तान के अंदर। और आखिर में हम कोशिश करेंगे एक मईशत दान से डिस्कस करने की कि वो इन दोनों इश्यूज़ में पाकिस्तान की मईशत को, वज़ीर ख़ज़ाना को कैसे देखते हैं। सो पहले सेगमेंट में वी विल स्पीक विथ निरान रहमान हु हैपन्स टू बी अ डायरेक्टर एट नीम। नीम इज़ अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर काम कर रहा है। निरान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सानी साहब, प्लेजर हैविंग मी। जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ नीम पे मी नाउ एंड आई वर्क विद 3 very very competent and lovely founders at Neem. Fantastic, fantastic. Very thank you for having me. Great. So निरान, थोड़ा सा ज़रा पहले बताएं, यू हैव हर्ड यू ऑल द इंट्रो। ये जो पाकिस्तान की मईशत है जिसके बारे में अक्सर वी कीप टॉकिंग के इसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और इसकी जो डाउन साइड है उसमें बेचारी सैलरी क्लास ही फंसती है। बट पहले बताएं कि ओवरऑल ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है इन्होंने सिचुएशन को तकरीबन उसी तरह संभाला जिस तरह केयर टेकर सेटअप ने संभाला था और उसमें एक कंटिन्यूटी का एलिमेंट नज़र आया। पहली दफ़ा है कि केयर टेकर सेटअप में भी IMF सेटिस्फाइड था और अभी भी जो आज के दिन खबर आई है IMF हैज़ कंक्लूडेड द रिव्यू एंड दे आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग। So how do you look at the present economic situation? Thank you, Sani Saab. So I'll be very, very honest with you. Right now, we feel that the ship is pretty much in a stable direction. आप काफ़ी देर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूँ. And the media has sometimes in the past talked about us being on the verge of default. And when the interim government जिसके आपने अभी बात की, वो भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को on the default से बचा लिया, which was on the verge of default. So we're not in that situation right now. And to be quite honest, I am more of a twin deficit sort of analyst or reader. Yeah. If your current account is consistently in a very, very small deficit and it is balanced and sometimes hitting a surplus, and you are moving the inward remittances towards a documented economical zone, which was done very successfully by the previous central bank as well. When you keep your currency, keeping the currency not, but when your current account is in a surplus, आपकी जो currency है, foreign portfolio investment जो foreign flows हैं, वो relatively consistent रहते हैं. Right. आपकी currency पे pressure तभी आता है जब आपका current account deficit inflate करना शुरू होता है. So when the reason why our currency is stable, very, very honestly, is because your current account is in control. And when your current account is in control, what happens is that also results in imported inflation being in control. Yeah. And when your currency is stable and your imported inflation is in control, and we're lucky that oil prices are relatively consistent, they're volatile, Middle East की tension आपके सामने है. Yeah. Despite that, the oil is relatively stable. So what that allows is that it allows your inflationary pressures to somewhat be contained, and inflation starts increasing at a decreasing rate. And that is what is happening in Pakistan right now. So the prices are not going to decline, but when inflation increases at a decreasing rate, it allows your interest rates to fall dramatically and remain positive. So a lot of people are surprised that आपने दुरुस्त कहा कि the IMF has given us a nod, besides the FPR not meeting its targets, but they've given us the nod with, one, a stable currency. What was the justification for that? Right. Current account stability. Two, they've given us a nod for an interest rate decline.
right? So IMF is known for high interest rates. What is the definition of that? There is actually a reduction of inflation increasing at a decreasing rate, specifically the cost. Right. So I don't want to get into the delve deeply into the IMF, but they look at two things at a very, very high level, right? One is the currency, two is your interest rates and your inflation. If you have justified both, and three, of course, is your tax collection. Yeah. But if you justified the first two well, which we have, it is actually a very, very big win for the current finance minister. Right, and the beneficiary of all these facts and figures are the players of the capital market who are invested and who are trading in the capital market. They are kind of jubilant because capital market की rally जो 37,000 से शुरू हुई थी 94-95,000 के level पर भी everybody feels like कि market में अभी भी stability है, market में correction के crash के chances नहीं हैं because जो value traded है हमने जैसे initially बात की कि वो 20 billion से ऊपर रहती है, that's a fantastic sign despite के 40 billion की leverage market है, but still you think कि ये मार्केट में स्टेबिलिटी का जो रन है वो आगे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है for 6 months or another? It's tough to say, right? I mean, me and you have been following the markets for a very, very long time. We've known each other for a long time, and if I knew all the answers, then I would have been different. But to be on a serious note, our markets are normally driven by liquidity, right? Yeah. So we were talking before the show, the Pakistan's equity markets and Pakistan investors, I think one thing which they take for granted is corporate valuations and corporate earnings growth. Because we are always on the verge of default or we have macroeconomic uncertainties, the market starts following macroeconomic uncertainties. Right. So, and then it sort of ignores corporate earnings. But the fact of the matter is, irrespective of all-time highs in the history of Pakistan, all-time high हमारा interest rate गया है, फिर भी हमारे corporates ने sustain किया है. तो अब जब मजे का time आया, when there is monetary easing taking place and the liquidity is flowing back into the equity markets, because let's be honest, हमारी मार्केट जो है बिकॉज हमारी फिक्स्ड इनकम मार्केट का साइज बहुत बड़ा है और हमारी स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 43-44 बिलियन, तो दोनों के साइजेस में बहुत फर्क है. तो जब भी फिक्स्ड इनकम में जब when you know there's monetary easing taking place, there's a liquidity injection in the secondary equity markets, and that results in, and this is all fundamental, right? So when we talk about fundamentals, one is the corporate earnings, those are in favor, right? We know that. And the second is this liquidity injection risk coming in, which is all a natural phenomena of the markets. So when we look at these two things, another thing which is important is the news has been coming of advanced deposit ratio and the advances which are coming into the banking sector, and we are seeing auto sales increase. This is just the beginning, right? So that's the way I see it, that the real ADR growth, the trigger for growth and the trigger for consumption is going to come in when we really see the banks working towards a better, higher advances. And so positive signs as long as this, is curtailed in an ecosystem where we do not create excessive leverage and excessive Fantastic. निरान अभी वक्त चाहता है छोटे से वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ADR को फर्दर एक्सप्लेन करें और ये बताएं कि गवर्नमेंट का जो करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो रियल एस्टेट के लिए कितना मुआवन और साजगार है, या गवर्नमेंट अभी चाहती है कि ट्रेडिंग इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस और रहे. नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में निरान ने हमें तफसील के साथ बताया कि व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का मंजरनामा रह सकता है. सो निरान, ओवर टू यू, थोड़ा सा बताएं कि पॉलिसी मेकर्स का आपको फोकस दिखता है कि रियल एस्टेट सेक्टर का भी थोड़ा सा नंबर लगाया जाए 4-6 महीने में? Well, to be quite honest, I have not deep dived into the real estate sector as much as I should be, but I do know that the policy is a bit inconsistent, right? So there's an unsurety in the policy because the valuations, there is when the real estate market is revalued in Pakistan, वो immediately आता है, regulator कोई ऐसी कोई warning नहीं देता कि भाई मैं valuation कर. We know that there's a revaluation exercise taking place, but it sort of happens abruptly and happens through the media, right? So I think when you look at the liquidity flow which we were talking about before the break, वो equity market में जाती है और कुछ real estate sector में भी जानी चाहिए. And one of the reasons why the real estate sector hasn't performed in the way it has is because of high interest rates. There's really no other reason. But the investor is probably seeing a more
regulatory consistency in the equity markets than the real estate market, Yeah. right? So we just have to figure out if you want investment flowing in real estate. I know economists are not fans because usko dead asset kehate hain, Right. but either way, for money to flow on that side, the regulations have to be a bit more consistent, and Right. and the equity markets seem to be a bit more. The corporates seem to be a bit more, in terms of regulations and policy, seem to be a bit more, conservative and easy to invest in. That's all. There's a third sector which I would like to also comment on, which is the SME sector. If there is a liquidity injection because of low interest rates and Right. there's a trigger of growth, I think venture capitalist funds should also come back into the Pakistan. The local businesses and probably the family offices can play a role in the the SME. So the startups and the entrepreneurship encouragement should also see a bigger impact and benefit than just the real estate or the Right. equity market. पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी पुअर हैं. स्टेट बैंक ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, आसान मोबाइल अकाउंट से लेकर यू नेम अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन प्लेस. कैपिटल मार्केट में इजी अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेसेस, डिजिटलाइजेशन के बावजूद भी इतना कुछ हमें नहीं दिखता जितना आई थिंक पाकिस्तानी सिटीज़न और द पाकिस्तानी मार्केट ऑफ दीज young persons who are into the employment they deserve. So do you have a take on this कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? So yeah, Sai साहब, we've known each other again for a very long time. तो हम हमेशा पाकिस्तान के सेविंग्स रेट पे डिस्कस करते हैं, और हमें जवाब यही आता है कि पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है उसको कैसे बढ़ाया जाए. फिर इन्फ्लेशन आई, अभी इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है, सेविंग रेट पाकिस्तान का नहीं बढ़ेगा तो हमारी म्यूचुअल फंड सेक्टर कैसे चलेगा, सेविंग रेट नहीं बढ़ेगा स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट to save, we also need to understand that financial literacy plays a major role in that, right? Financial literacy, we're very proud at Neem Pay Me Now कि हम financial literacy पे बहुत concentrate करते हैं, और हम salary class के साथ directly हम एक product offer करते हैं, which means that we're a B2B2C model. So we work with large corporates and businesses, and we try to bring financial literacy and financial wellness within the salary class. How do we encourage Pakistanis to save? It is actually telling them the difference between a need and a want. फजूल खर्ची और ज़रूरतमंद खर्ची का फ़र्क क्या है, ठीक है? So we have to really get back to the basics and increasing the savings rate in Pakistan, the savings to GDP rate in Pakistan, and we can talk about savings now when we have a decline in inflation. और लोगों की जो घर की जो बजट है, घर की बजट कैसे बनती है, राइट? फजूल खर्ची कैसे आपने कम करनी है, इमरजेंसीज या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपने सेव कैसे करना है, जो अंग्रेजी में कहते हैं save for a rainy day. Yeah. But it's true. Like, how do you save for an emergency, right? So we do earned wage access in Pakistan, and very, very proud of that. It's not about the product itself, but I think it's more about financial literacy for the salaried class. So in these tough times with high taxation, how can they budget themselves better for a rainy day? So मैं जहाँ तक समझाऊँ, I think आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम इंडिविजुअल जो कि सैलरीड क्लास है वो ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसको सब्सक्राइब कर सकता है, वेदर उसका एम्प्लॉयर ऑन बोर्ड हो या ना हो, ऐसा है? Well, we have to, so it comes to the employer, right? Okay. So we're a B2B2C model. Okay. Without taking any clients' names, the best way to explain it is कि फर्ज करें मैं महीने का 30,000 रुपए कमाता हूँ नेट आफ्टर टैक्स. इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1,000 रुपए कमाता हूँ दिन में. Yes. इसका मतलब ये हुआ कि 15वें दिन पे मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ. Yes. तो अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई where I need money before my paycheck. Yeah. I do not want to wait. I don't have to wait till the end of the month for my paycheck. I can use Neem Pay Me Now to draw down my earned wage, because at the end I have earned those 15,000 rupees. It is only the employer that has decided that they are going to pay us on a monthly basis. So we work very closely with large organizations in Pakistan to kind of get them on board so we can provide this financial relief to their employees so they can have access to their earned wage within the pay cycle, the monthly pay cycle. And how do you protect your interest, your bit? You ask the employer to kind of block that kind of... Sure. The employer, our client is the employer, but our service is for the employee. So in this, we talk about high taxes for the salary class and they being the bloodline and the blood flow of our workforce, of our economy. Right. What we are basically trying to say is that they should not be borrowing from friends and family and high interest rate instruments or unregulated high interest rate unregulated
applications. They should not be borrowing from any of these sources, Right. but should have access to wages they've already earned so they can meet an emergency expense. Are you trying to say कि आप लोग इसके ऊपर कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेते? So service charges are based on the service, right? So And not the markup. So yeah, so there's a collection fee or a Right. service fee, but it is a non-interest based situation, right? So it's less about the charge and more about the fact that we want to give the salaried class their dignity back. When you go as a salaried person to borrow from friends or family or somebody else, आपकी थोड़ी सी dignity as a human being गिर जाती है. Yes. So we are trying to solve that problem. White collar people or even blue collar people cannot go and beg on the streets. Yes. But they sometimes find themselves in a situation where they have to borrow money to meet an emergency expense. Right. Why do that when you can give them access to their earned wages in the middle of their pay cycle? That is the impact that we're trying to create. It's about, and then what that does is कि जो financial stress है, देखिए stresses बहुत किस्म के होते हैं सानी साहब. हम stock market show करते हैं तो we have a bit of a understanding. Right. Financial stress is links to emotional stress. And then emotional stress leads to physical stress, and they're all three connected. Right. So what we're trying to do is reduce financial stress in Pakistan. And to be quite honest, financial stress is also one of the key roles for the jump in the suicide rate in Pakistan. So we're not saying we have all the answers, but we're trying to bring a product which reduces financial stress for the salaried class. So a person who is working for some employer after watching this program has to go to his employer and say, contact Niran. Contact Niran on LinkedIn is the best way to get a hold of me, to be quite Fantastic. honest. Yes. हमने बात की थी शुरू में कि कोई 3 मिलियन के आसपास टैक्स पेयर हैं. आपकी ये जो प्रोडक्ट बेस है ये कितने लोगों को टारगेट कर रही है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर और यू फोकसिंग ओनली ऑन लार्ज कॉर्पोरेशंस? Well, right now we are for everyone. Right. We do not like to put restrictions on ourselves. Right. Any organization that wants to bring value to its employees, we are there for them. I don't want to get into the technicalities, but we fall into the S of ESG. Right. बहुत से बड़े हमारे पाकिस्तान के बहुत से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करना चाहते हैं कुछ ताकि उनको बाहर से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले. Right. How you take care of people is what our generation is all about. Not our generation, हम तो माशाल्लाह बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं, taking care of people is what it's all about. So from a holistic human resource perspective, we are turning more in the individualism of things. And when you go into individualism, you have to address specific problems, not just holistic problems. Right. So what we're trying to do is we'll work with any organization which truly wants to do something brilliant, outstanding, and impactful for its employees. Right. And because हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो एक दो चीज़ों को टच बेस करना बड़ा ज़रूरी है. We just want a confirmation from you कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से अप्रूव्ड है और Yeah, 100%. We are definitely approved and regulated very sternly by the very, very amazing and accomplished Security Exchange Commission of Pakistan, who I would like to give a shout out to. Right. For us in the startup community, they have really played a fantastic role. निरान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान मजीद. उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ADR के मसले को वो कैसे देखते हैं और IMF ने जो सोलराइजेशन के ऊपर एतराज़ उठाया है उस पर उनका क्या व्यू है. सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद. नुमान से हम समझने की कोशिश करते हैं कि IMF ने जो सोलराइजेशन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ एतराज़ उठाया है या जो मास स्केल पाकिस्तान में सोलराइजेशन हो रही है जिसकी वजह से डिस्कोर्स को 18-20% नुकसान में चले गए हैं, IMF इसके ऊपर क्यों कंसर्न है और IMF दरअसल पाकिस्तान से क्या चाहता है. सो नुमान साहब, ओवर टू यू. थैंक यू सनी साहब फॉर इनवाइटिंग इन द शो. देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की सोलराइजेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, ग्लोबली दुनिया में अब मैसिव सोलराइजेशन की बजाय माइक्रो एंड नैनो सोलराइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है. और वो एक ऐसे इंफ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर हम पहुंचते हैं कि हम फेवरेबल नॉन फेवरेबल जो भी सोलराइजेशन पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो आप सोलराइजेशन के प्रोसेस को रोक नहीं सकते. आप देखिए, इस वक्त दुनिया भर में एक जो बहुत बड़ा काम हो रहा है, इवन अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड जो इस पे काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ ग्रिड सोलराइजेशन.
یعنی وہ سولر پلانٹس، وہ سولر کے یونٹس جو کہ گرڈ کا حصہ نہیں ہے. فیوچر جو ہے دنیا بھر میں وہ مائکرو اینڈ نینو اینڈ آف گرڈ سولرائزیشن کا ہے. اگر آئی ایم ایف کو لگتا ہے یا کسی کو بھی لگتا ہے وہ اس سولرائزیشن کے پروسیس کو روک سکتے ہیں تو یہ اس پروسیس کو روکنا ناممکن ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو 40,000 میگا واٹ کی اپنی کیپیسٹی کریٹ کر لی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب اس کے لیے ہم کیپیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں اور اس کا برڈن ہم انڈسٹری کو دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے پاکستان میں ایکسپورٹس کرنی ہے، پاکستان میں جاب کریشن کرنی ہے، ہم نے ملک میں انڈسٹری لگانی ہے. صرف کیپیسٹی لگانے سے کام نہیں ہو چلتا. آپ کے بزنس کا کاسٹ افیکٹو ہونا اور کمپیٹیٹو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں صرف اس پرپز کے لیے کہ چونکہ ملک میں پاور کی ایکسس کیپیسٹی موجود ہے، صرف اس کو اس کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم انڈسٹری کو انکمپیٹیو کر دیں گے یا ہم جو ہے اپنی انڈسٹری کے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھا دیں گے تو یہ چیز تو پھر آپ کی ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کا جو پورا اکنامک پالیسی کا فریم ورک آپ دیکھیں گے اس میں کاسٹ آف پروڈکشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اٹ از ہائی ٹیکسز، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی پاور ریٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح 3 چیزوں کو دیکھیں جو بنیادی آئی ایم ایف کی شرائط دی تھی، یعنی کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی ٹیکس اینڈ ہائی پاور ریٹ. کیسے پاکستان جیسے غریب ملک میں جس میں اتنی ارلی اسٹیج آف انڈسٹریلائزیشن ہے ہم کیسے گلوبل مارکیٹ پہ کمپیٹ کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کسی بھی ایسی پالیسی جو ہے سولرائزیشن یا اس کو جو ہے اس کو کمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں پاکستان کی اکانومی کی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو جو یہ پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کو ریورس کرنا ناممکن ہے. نعمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اے ڈی آر کے اوپر بینکوں کو ریلیف دے دیا ہے اور اس کا جو ٹیکس ہے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ ابھی کلیکٹ نہ کرے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ دیکھیے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اٹ آل ڈیپینڈ بیسکلی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے بڑا آسان ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائے اور وہاں سے اوور ٹرن کروا لے. تو گورنمنٹ از اے لاٹ آف آپشن. اب یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی گورنمنٹ بینکوں کو اے ڈی آر کے حوالے سے کتنا ٹائٹ کرنے کے موڈ میں ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریلیف آپ کو ہائی کورٹ سے مل بھی گیا ہے تو فار ہاؤ لانگ کین یو کیپ آن ڈوئنگ دس ریلیف؟ کیونکہ اس کے 2 اینگل ہیں اس پوری اے ڈی آر پالیسی کے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ٹیکسیشن کا پارٹ ہے، لیکن دوسرا ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا بینکوں کے پاس وہ ایونیوز موجود ہیں یا نہیں جہاں وہ اپنا پیسہ لگا سکیں. لیکن اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی بورنگ نیڈ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بینکوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ بینک مارکیٹ میں انڈسٹری میں پیسے لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اس وقت آف ٹیک نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. آپ کا ریٹیل سیکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت. ریٹیل آپ کسی بھی ریٹیلر سے بات کریں چاہے وہ پریمیم ریٹیلر ہو یا چھوٹا ریٹیلر ہو، ریٹیل ڈیمانڈ بھی ڈاؤن ہے. آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے. تو بینک کو اگر ہم اے ڈی آر کو اگر ہم بیسکلی ریلیف دیں یا نہ دیں، بات یہ ہے کہ بینک آخر پیسہ لگائے گا تو کہاں لگائے گا. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اگر آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں تو بینکوں کی بھی اپنی بہت زیادہ لمیٹیشن ہیں. بینکوں میں بہت پیسے بنائے ہیں اور بینکوں کا تو پچھلے دنوں میں انسینٹیو بھی ختم ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے نا انہوں نے کوشش کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے دیں. بٹ اگین اگر ہم جہاں بینکوں پہ اے ڈی آر کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا ہوگا کہ جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بورنگ کرنے کا تیار ہو. ابھی آپ دیکھیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ٹیکسز لگے ہیں تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کا جو اینگل ہے وہ تقریباً رک گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 1 سال کے لیے ریلیف دے بھی دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کتنے سے دیا گیا ہے، لیکن دا وے آئی لوکیٹڈ جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ اگر سنگل ڈیجٹ میں آتے ہیں 10% کے آس پاس آتے ہیں تو پھر جو انڈسٹری ہے اور انڈیویجول ہے اس کی بورنگ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد بینکوں کے لیے یہ جواز دینا شاید مشکل ہو کہ انہیں مزید کسی بھی قسم کے ریلیف کی ضرورت ہے. تو اگر کچھ عرصے کے لیے دے بھی دیا جاتا ہے لیکن اس دوران بینکوں کو گیئر اپ کرنا ہوگا کہ وہ انڈسٹری کے کس سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکنا مقصد نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں رسک مینجمنٹ کے پراپر رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ اے ڈی آر والا جو ایشو ہے نا یہ بڑا چیلنجنگ رہے گا آنے والے دنوں میں. ایک طرف آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ سسٹم میں اویلیبل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی میں ایسے ایونیوز کی کمی رہے گی کہ جہاں پہ پیسے کو ڈپلوائے کیا جا سکے. زبردست. نعمان صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نعمان آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے نران رحمان اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا نعمان عبد المجید نے. دونوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں اس وقت جو چیلنجز ہیں اور اس میں جو اصل مسائل کا شکار ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے اور اس کے لیے گوئنگ فارورڈ اگر راستہ کوئی ہے تو وہ کیا ہے.
निरान रहमान ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें समहाउ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जो सैलरीड क्लास है वो ऑलवेज़ अंडर स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस की जो बहुत सारी किस्में पाकिस्तान में बहरहाल इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो एक ही एलिमेंट के तौर पे उभर रहा है। और इसमें फाइनेंशियल वेलनेस के नाम पर दे हैव कम अप विथ एन इनिशिएटिव जिसमें किसी इंडिविजुअल ने किसी महीने में जो भी वेज अर्न किया होता है वो वेज जो है वो विड्रॉ कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस सैलरी बाय यूजिंग देयर एप्लीकेशन। इसके लिए जो एम्प्लॉयर हैं वो इनकी कंपनी से रब्ता वगैरह करते हैं। सो दैट हैपन्स टू बी अ गुड इनिशिएटिव, बट ऑन द इकोनॉमिक साइड ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान में अब इस तरह का साइकिल बनता नज़र आ रहा है कि कैपिटल मार्केट जो है वो 4.5 से 6 के मल्टीपल पे जाए। इंडेक्स जो है वो गो के देखना उन्होंने कहा मुनासिब नहीं है, बट ही सेड कि ये 130 के लेवल को क्रॉस करेगा, और जब ये क्रॉस कर लेगा तो उस वक्त नज़र आएगा कि शायद पॉलिसी मेकर्स जो है कैपिटल मार्केट से पैसे को रियल इस्टेट की तरफ लेके जाएँ। सो गोइंग फॉरवर्ड एक नक्शा इस तरह का बनता नज़र आ रहा है कि मार्च अप्रैल में आपको रियल इस्टेट सेक्टर में भी कुछ ट्रैक्शन नज़र आए। नुमान अब्दुल मजीद ने हमें तफसील के साथ बताया, एक्सप्लेन किया कि अब दुनिया जो है ग्रिड सिस्टम से माइक्रो और नैनो साइड पे मूव हो चुकी है, और सोलराइजेशन को डिस्करेज करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। IMF को इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी को रिट्रीट करना पड़ेगा, और जो ADR है ये जब सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट चले जाएंगे तो इस सिचुएशन में भी बैंकों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि वो बार बार हाई कोर्ट से बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कोई स्टे वगैरह ग्रांट करा लें। सो गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी रहेगी। हम अगले 2-3 महीनों में बाज़ार हिस्से की परफॉर्मेंस को भी गेज करेंगे। बैंकिंग एसोसिएशन के जो इस वक्त CEO हैं मुनीर कमाल, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि सैलरीड क्लास के लिए इस तरह के मज़ीद किस तरह के इनिशिएटिव कौन कौन सी कंपनीज़ ले रही हैं। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तजज़िये का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।